Assalamualaikum students, welcome back to a smart classroom. Students, आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है because today you are going to become the decision makers. अब तक हम मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंट मेथड्स सीख चुके हैं, स्पेशली द ग्रिड मेथड एंड द कॉलम मेथड. लेकिन आज मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी हो तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ग्रिड मेथड यूज करना है या कॉलम मेथड. और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर कैलकुलेट करने से पहले हम एस्टिमेट क्यों करते हैं. आज हम इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कवर करेंगे. सो लेट्स टेक आउट योर मैथ्स बुक, पेंसिल एंड इरेजर. नाउ लेट्स बिगिन. स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स ओपन करें. टुडे वी आर वर्किंग ऑन एक्सरसाइज 3A रिटन मेथड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन. और आज का टॉपिक है चूज अ मेथड टू मल्टीप्लाई. आवर कीवर्ड्स आर कॉलम मेथड एंड रिकम्बाइन. और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जो आज हम यूज करेंगे, दैट इज estimation. Before starting today's question, let's quickly revise our two methods. Grid method. Grid method में हम numbers को partition करते हैं. Then हम एक grid draw करते हैं, उसमें multiply करते हैं हर number को और उसके जो answers आए होते हैं उनको add करते हैं. और column method एक simple method है जिसमें हम दो नंबर्स को ऊपर नीचे रखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लिखा हुआ है 256 मल्टीप्लाई बाय 3. दिस वन इज योर कॉलम मेथड एंड दिस वन इज योर ग्रिड मेथड. इसमें हमने क्या बनाई है, एक ग्रिड बनाई हुई है. और कॉलम मेथड में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना, स्टार्ट फ्रॉम द वंस. और अगर 2 डिजिट नंबर आ जाए तो हम क्या करते हैं, कैरी देते हैं नेक्स्ट नंबर पर, रिकम्बाइन करते हैं. नोटिस समथिंग इंपॉर्टेंट, बोथ मेथड्स गिव्स अस द सेम आंसर, सो वी कैन चूज अ मेथड दैट वी आर कंफर्टेबल यूजिंग. स्टूडेंट्स, बुक में एक वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर दिया गया है, एस्टिमेट द आंसर फर्स्ट. बट व्हाई? Imagine you calculate 256 multiplied by 3 equals to 768. How do you know that 768 makes sense? We can estimate. 256 is closer to 250. 256 is closer to 250 and 250 multiplied by 3 equals to 750. So our actual answer should be a little more than 750 and our answer is 768. Yes, 768 is little more than 750. Therefore, our answer makes sense. So, remember, estimate first, then calculate, and then check. This is a very good mathematical habit. Now, let's solve question number 1. Question number 1 is, use any method to calculate these products. शो योर वर्किंग्स. अच्छा जी, अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि कोई भी मेथड आप चूज कर सकते हैं, या तो आप कॉलम मेथड यूज कर लें या आप ग्रिड मेथड यूज कर लें. और इन क्वेश्चंस के आंसर्स उसने पूछे हैं. पहला क्वेश्चन है 173 मल्टीप्लाई बाय 5. बट स्टूडेंट्स, डोंट कैलकुलेट इमीडिएटली, फर्स्ट estimate. 173 is closer to 150
70। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में मैंने एस्टिमेशन आपको बहुत डिटेल से समझाई है। आप 100 प्लेस तक कैसे राउंड ऑफ करेंगे, 1000 प्लेस पे कैसे करेंगे, 10 प्लेस पे करेंगे, कैसे करेंगे। अगर आपने वहां से एस्टिमेशन अभी तक नहीं सीखी तो पहले आप वहां से एस्टिमेशन सीखें, देन आप इस लेक्चर को समझिएगा। 173 is more closer to 170. So 175 multiply by 5. 5 0 times is 0. 5 7 times is 35. 5 3 carry. 5 1 times is 5. And 5 plus 3 equals to 850. Therefore, our estimation is 850. This means our exact answer should be closer to 850. Now let's calculate the exact answer. We can use the column method. हम यहाँ पे column method use करते हैं। 173 multiply by 5. Start from the ones. 5 3 times is 15. 5 1 carry. 5 7 times is 35. 35 plus 1 equals to 36. 6 3 carry. 5 1 times is 5 and 5 plus 3 equals to 8. So our answer is 865. This is our exact answer. Now compare. Estimated answer is 850 and the exact answer is 865. 865 is close to 850. So our answer makes sense. Next, 258 multiply by 3. Again, first we estimate 258 is more closer to 260. 260 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 times is 0. 3 6 times is 18. 8 1 carry. 3 2 times is 6 and 6 plus 1 equals to 7. So our estimated answer is 780. Now let's calculate the exact answer. हम again column method use करते हैं। 258 multiply by 3. 3 8 times is 24. 4 2 carry. 3 5 times is 15. 15 plus 2 equals to 17. 7 1 carry. 3 2 times is 6 and 6 plus 1 equals to 7. So our exact answer is 774. 774 is very close to 780. So our answer makes sense. Next is question number 3. 186 multiply by 4. First we estimate and then we calculate the exact answer. अच्छा जी, 186 is more closer to 190. Now 190 multiply by 4. 4 0 times is 0. 4 9 times is 36. 6 3 carry. 4 1 times is 4 and 4 plus 3 equals to 7. So our estimated answer is 760. Now let's calculate exactly by using column method. 186 multiply by 4. 4 6 times is 24. 4 2 carry. 4 8 times is 32. 32 plus 2 equals to 34. 4 3 carry. 4 1 times is 4 and 4 plus 3 equals to 7. So our exact answer is 744 and 744 is closer to 760. So our answer is reasonable. Next is the last part number 4. Part number 4 is 143 multiply by 6. Students,
143 is more closer to 140. So 140 multiply by 6. 6 0 times is 0. 6 4 times is 24. 4 2 carry. 6 1 times is 6. 7 and 8. Our estimated answer is 840. Now we calculate the exact answer. Exact value. 143 multiply by 6. 6 3 times is 18. 8 1 carry. 6 4 times is 24. 24 plus 1 equals to 25. 5 2 carry. 6 1 times is 6. 6 plus 2 equals to 8. 858. So our exact answer is 858. 858 is close to 840. So again, our answer is reasonable. So students, how do we choose a method? Now comes the most important part of today's lesson. The book says, use any method to calculate these products. That means we can choose between methods we have learned. For example, grid method. This method is very useful when we want to clearly see the place value parts of a number. For example, 173, 100 plus 70 plus 3. We can multiply each part separately. Column method. This method is usually quicker ones. We are confident with multiplication and regrouping. So students, there isn't always only one correct method. Different methods can lead us the same correct answer. The important thing is choose a method you understand and can use accurately. Some common mistakes that we can avoid while doing our multiplication sums: not estimating before calculating. Remember, estimate first. Forgetting to carry. We cannot simplify, write 15 in the ones column. Mistake number 3, not checking the answer against the estimation. If your estimate is around 850 and your exact answers suddenly becomes 1850, you should stop and check your calculation. Thinking there is only one method, you can use the grid method or column method depending on the question and your confidence. Before we finish, let's recap today's important learning. Today we learned we can use different methods for multiplication. For example, grid method and column method. Estimate before calculating. This helps us know approximately what our answer should be. Compare the exact answer with the estimate. If you are reasonably close, our answer is likely sensible. Recombine carefully in the column method. Always remember your caret number. Choose a method you understand. The best method is the one you can use accurately and confidently. Before we say goodbye, here's your final challenge. Without solving it fully, estimate 197 multiply by 4. Think carefully and write the answer in the comment section. And that's all for today's lesson. Today we learned that multiplication doesn't always have to be solved in just one way. We can use different methods. Remember our mathematical routine. Estimate, calculate, and then check. If you found today's lesson helpful, don't forget to like this video, subscribe to a Smart Classroom, and share it with your classmates. And remember, a good mathematician doesn't just find an answer. They check whether the answer makes sense. Keep practicing, keep thinking, and keep learning.
अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।